is the question, right? Yesterday pe ki the. So this is the assistant geologist last year question. 2022 last year question. This is the. What is the answer? आप लोग बोले कल कि it is the univariate line. It is not the first. तो जब भी attempt लोगे first cancel out all those which is not required. So invariant point is not be answer और divariant field will not be answer. Yes or no बताओ. मैं वही बताया था from the phase diagram P plus F will be the C plus 2, right? At the invariant point degree of freedom will be 0. Am I right or wrong? It is a point. Simple. Along which there will be the assemblage of how many phases? Tell me. कितना phases stable होंगे invariant point पे? Maximum. If you take the L2 SiO5 system, not 3, मैं system define नहीं किया हूँ. So now you tell me. L2 SiO5 system पे how many maximum phases stable at the invariant point? So P will be C plus 2 because degree of freedom will be 0, right? So phase कितना होगा? Component will be 1. So maximum will be 3 phases stable at invariant point. ठीक है? Invariant point is a point where the degree of freedom will be 0. It is not a line. It is a point simply. But in the question, if you look at the question, it is given कि possible equilibrium mineral assemblage are indicated by lines. It is not field or either it is not point. Simple. It is a line. I don't have presentation. What is your doubt exactly? I don't get your point. Screen is visible, right? Subrat, Ruby, visible, right? Ruby, Subrat. Okay. You again rejoin. Okay. So see, so this is the divariant field where the degree of freedom will be 2. So this is the invariant point where the degree of freedom will be 0. So this is the univariant line. Univariant line where the degree of freedom will be 1. If the degree of freedom will be 1, then how many maximum phases are possible? If 1, then phase will be C plus 1, that means 2 for the L2 SiO5 system. Hey, Kini. If you mark also along that line, suppose this is the kyanite field, this is the sillimanite field. So along that line, kyanite and sillimanite are both stable here. Am I right or wrong? So this is all about the univariant line. Okay? So doubt is about univariant line and tie line. Okay? See, the univariant line also, there are the mineral assemblage is there along that line. Possible equilibrium mineral assemblage are there along the univariant line. That means along that univariant line, kyanite and sillimanite are stable. These are the mineral assemblage present along that line. Clear? But thing is, these are not connecting the same compositional page. Are you getting my point or no? So the answer will be tie line, not univariant line. Okay? Clear? I will see what is the exact mean. हाँ, अभी आया है compositional के. Composition change नहीं होगा ना? जैसे kyanite और sillimanite is like composition wise same L2 SiO5. Am I right? But these are not joining the same compositional page. These are the present at like other field. These are not connecting the line between the same page. If you mark, suppose if you mark, suppose मैं igneous से correlate करता हूँ, ठीक है? Then we will understand. So reaction is due to these, the tie line flip reaction will be there. ठीक है? Tie line flip reaction. This is not like important for the examination point of view for the assistant or like
छोटा मोटा जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम, दिस इज द मोर एप्लीकेबल फॉर द गेट एग्जामिनेशन. ठीक है, दिस इज स्लाइटली एडवांस टॉपिक लाइक प्रोजेक्शन टाइप. ठीक है, एंड ड्राइंग द डिफरेंट टाइप ऑफ heterogeneity grid, SCFA construction. So this is a slightly advanced topic, tie-line flip reaction, but I will just emphasize on what is the exact meaning of tie-line. ये देखो, tie-line अगर join तुम करते हो in the igneous system, I am not talking about the metamorphic system. If you join the same phase, suppose मान लो ये कौन सा सिस्टम है, क्या ले इसको बताओ, ए फेज मान लो, बी फेज मान लो, सिस्टम छोड़ो, ए बी फेज सिस्टम. तो व्हाट इज द, सपोज ये मेल्ट कंपोजिशन है, सपोज एक्स. इफ यू लाइक डिक्रीज द टेम्परेचर हियर, द फर्स्ट क्रिस्टल विल फॉर्म. एम आई राइट और रॉन्ग? सो अलोंग दैट पॉइंट, इफ यू नो द व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ द लिक्विड एंड व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ सॉलिड, कैसे हमको पता चलता है? ड्रॉ द सिंपल टाई लाइन, राइट? What is the implication of the tie line? Tie line joins the same compositional phase between two, right? So that's why the implication of the tie line coexist in the metamorphic system. Sorry, igneous system के लिए बोला. So that is the exact meaning of tie line. But you look at the, if you take the metamorphic system, suppose ये A phase है, मान लो ये B phase है. If you join this line between the A and B, so this line connecting the same phase between the A and B. So along that A and B, the reaction will take place to form the another product. जैसे मान लो A plus B will giving rise to some product here. Clear? So this is the line that joins the same composition phase between two phase. Clear or no? Doubt है तो पूछो. This is for metamorphic system. ठीक है, सपोज मान लो अनदर फेज है C and D. So A plus B react with to give rise to C plus 2. Another product is there. Clear? इतना समझ में आ गया? So this is all about the tie line. ठीक है, so answer will be tie line. Clear? ये डिस्कस किए थे. C. The tie line are the lines connecting the phase that coexist in a composition on the phase diagram. They represent the equilibrium condition between two phase. Equilibrium condition, suppose मान लो ये A है, B है. This line joining between the two phase and that equilibrium with each other, A and B. So this is in the equilibrium condition between two phases and indicate the relative proportion of the phase in the mixture. ठीक है, ए कितना परसेंटेज है, बी कितना परसेंटेज है. ठीक है, यूनिवेरिएंट लाइन सेम, कनेक्ट टू फेजेस, रिप्रेजेंट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड प्रेशर, ओनली टू फेजेस कैन कोएग्जिस्ट. हियर द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 1 बताया था. सो P plus F will be C plus 2, so P will be C plus 2. ठीक है, invariant point degree of freedom will be 0 and divariant field degree of freedom will be 2. See, the divariant is field, invariant is point, univariant is line. Divariant is an area. So this is the all about divariant situation, and this point is all about the invariant situation, and this line is all about the univariant situation. इतना क्लियर हो गया या नहीं? Let's talk about some of the reaction. I already mentioned कि isograd क्या है. You tell me what is the meaning of isograd? Right, exactly. Along that petty condition, what is the line joining the same phase or same grade? Okay, so it is a line that field that demarcates the first appearance, also the first appearance of a new mineral phase. Suppose ये मान लो, suppose ये हो गया क्लोराइड जोन, ये हो गया आपका बायोटाइट जोन. ठीक है कि नहीं? So this is the biotite isograd. ठीक है, along that isograd first appearance of biotite. ठीक है, ये मार्क करता है न्यू मिनरल फेज, ऑल्सो न्यू मिनरल फेज, फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ न्यू मिनरल फेज, ऑल्सो देयर विल बी सम रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑल्सो. ठीक है, यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई इन द फील्ड ऑल्सो. सी
वर्कर नीड ओनली बी एबल टू रिकॉग्नाइज द मिनरल्स इन हैंड स्पेसिमेन. ठीक है, जब फील्ड जाते हो यू कैन आइडेंटिफाई ऑल दोस zone and you can identify the isograd that connecting is the same grade and there will be the fast appearance of the new mineral. ठीक है, clear? We already discussed now. So categorization based on the reaction effect. ठीक है, रिएक्शन के बेसिस से कैसे हम कैटेगराइजेशन करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन. वन थिंग इज द नेट ट्रांसफर रिएक्शन, one thing is the exchange reaction. Can anyone tell me what is the net transfer and what is the exchange reaction? I just want to say कि ये आप लोग का MSc में था या नहीं. I don't think so कि may have studied in the MSc time or it is completely new. This is a slightly advanced topic. हाँ बताओ. MSc syllabus, right? All those things, net transfer action. Okay, then you tell me what is the exact meaning of net transfer reaction. Okay, okay, anyone just tell me about net transfer reaction. And also the part is रिएक्शन आपको याद होना चाहिए. कॉन्सेप्ट तो अलग बात है लेकिन रिएक्शन से क्वेश्चन आता है. जैसे मान लो ये दे दिया क्वेश्चन, एनोथाइट विल बी प्रोड्यूसिंग द ग्रोसुलर एंड काइनेट अलोंग विद कर्ज. व्हाट इज द रिएक्शन? ठीक है, वेदर इट इज अ नेट ट्रांसफर रिएक्शन, व्हाट इज द एक्शन रिएक्शन, वेदर इट इज अ टाइलाइन फ्लिक रिएक्शन, वेदर इट इज अ कंटीन्यूअस रिएक्शन. बताओ. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू कैन हैव मे बी इन एग्जामिनेशन हॉल. बताओ, anyone just tell me. सुब्रत, सरोज, दिनेश, विदुषी, जियोलॉजी वाला बताओ. जियोलॉजी वाला, विदुषी, anyone? Okay. Even if the your answer will be wrong, it's fine. It's fine. हाँ, पहले जब भी तुम कोई भी चीज पढ़ रहे हो यू शुड गो विद द लिटरेचर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसफर? सपोज यू आर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सिंपल वे. तो यहां पे ट्रांसफर क्या होगा? सिंपल बताओ ना. नॉट आयंस, नॉट आयंस. दैट इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन. That is ion exchange reaction, not exchange reaction. Difference देखो, ion exchange and exchange. Exchange reaction is particular like species, chemical species. हाँ बोल सकते हो. Exchange और ion exchange सेम हो सकता है. The particular species like मान लो कि पोटेशियम है in a rock, that potassium will transfer. ठीक है, in the different type of rock. So that is called exchange reaction. ट्रांसफर रिएक्शन क्या है बताओ. सपोज ए प्लस बी विल बी सी प्लस टू, सी प्लस डी. क्या एक्सचेंज होगा और सॉरी क्या ट्रांसफर होगा? नहीं, ऐसा नहीं है. मैं बोला ना ए प्लस बी विल बी सी प्लस टू डी. सो हियर ए एंड बी, सी एंड डी आर द सॉलिड केमिकल स्पेसिस. ठीक है, तो ये क्या ट्रांसफर होगा? दैट मीन्स जो भी रिएक्टेंट है, ठीक है, दैट इज कंप्लीटली डिसअपियर एंड न्यू फेज विल कम. ओके, बट थिंग इज द केमिकल कंपोजिशन इज प्रिजर्व इन द प्रोडक्ट साइड. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नो? जैसे मान लो मैं सिंपल वर्ड पे आपको समझा रहा हूं. सपोज आपका ट्रांसफर हुआ है राजस्थान से न्यू दिल्ली. ठीक है, ट्रांसफर हुआ है, बट
आप तो सारे कुछ चीजें लेके जाते हो ना दिल्ली, या वहीं पे फेंक के आते हो, ये बताओ। लेके जाते हो ना, सेम चीज। आपका ट्रांसफर, देयर विल बी द कंप्लीटली न्यू फेज विल बी कम, बट थिंग इज द कंपोजिशन और लाइक ये बोल सकते हो केमिकल कंपोनेंट, बोल सकते हो केमिकल कंपोनेंट। सपोज ए पे सपोज पोटेशियम है, द अमाउंट ऑफ पोटेशियम विल बी देयर। इफ यू लुक एट द प्रोडक्ट साइड, द पोटेशियम कहीं स्पेसिस पे होगा, जरूर होगा। दैट इज द मेन लाइक फंडामेंटल ऑफ द नेट ट्रांसफर रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। द रिएक्टेंट विल गिव्स राइज टू अनदर प्रोडक्ट, ठीक है, बट थिंग इज द केमिकल कंपोजिशन और केमिकल कंपोनेंट विल बी प्रिजर्व। फेज चेंज हो जाएगा, जैसे ए बी ये अलग फेज है, सी और डी अलग फेज है, बट थिंग इज सी डी पे सेम कंपोनेंट आपको मिलेगा। जैसे मान लो ए पे पोटेशियम रिच मिनरल है, ठीक है, सी डी पे कहीं पे पोटेशियम होगा, जरूर होगा। दैट इज द मेन फंडामेंटल ऑफ द नेट ट्रांसफर रिएक्शन। क्लियर और एनी डाउट यू टेल मी। Exactly, that is the transition reaction or a transition of phase in the interior of earth, ठीक है, वो फेज चेंज होता है, ठीक है, बट हाँ ये बोल सकते हो यहाँ पे न्यू फेज होगा, बट केमिकल स्पेसीज और केमिकल कंपोजिशन प्रिजर्व रहेगा, है कि नहीं, बताओ। ओके, सो नेट ट्रांसफर रिएक्शन इन्वॉल्व द केमिकल कंपोनेंट्स being transferred from one phase or set of phases to other. New phases are produced as old one disappear. See, जो ओल्ड फेज है ए बी ये डिसअपियर होके अलग फेज बनाएगा सी प्लस डी, बट थिंग इज द केमिकल कंपोनेंट आर ट्रांसफर्ड। सी इन्वॉल्व द केमिकल कंपोनेंट बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फेज और सेट ऑफ फेजेस। क्लियर, इतना क्लियर हुआ या एनी डाउट, जस्ट टेल मी। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बट यू हैव टू मेमोराइज दिस पार्ट। ये तो आपको मेमोराइज करना है ना, इसमें क्या है, this part you have to memorize, but understanding concept, that is more important. Clear? जैसे सिंपल वर्ड पे रिएक्टेंट एक अलग प्रोडक्ट देगा, बट द कंपोनेंट विल बी प्रिजर्व एट द प्रोडक्ट। क्लियर? सो द मेन mineral is anorthite, will gives rise to grossular, kyanite, and along with that quartz. What is the composition of anorthite? Just tell me. Ca Si3O8 और 2O8, राइट। ग्रोसुलर फॉर्मेशन बताओ। काइनेट इज Al2SiO5, am I right or wrong? See, यहाँ पे CaL2Si2O8 है, yes or no? So this is the aluminum bearing, this is the calcium bearing. If you see the product side, grossular is calcium bearing, right? Kyanite is aluminum bearing, along with the silica is present. That means when you gives rise to the product, the chemical species is preserved, but it will give rise to different type of set of phases, the new phases, right? Old phase disappear, new phase will come, but in the product side or in the new phase, the chemical species will preserve. Clear? बस ये याद रखना, ठीक है। एनोथाइड गिव्स राइज टू ग्रोसुलर, काइनाइट एंड क्वार्ट्ज। जब भी कहीं पे रिएक्शन दिया होगा, पहले मार्क करना, रिएक्टेंट साइड को देखना, प्रोडक्ट साइड को देखना। जब भी क्वेश्चन पे पूछेगा, पहले ये है, दिस इज द फंडामेंटल। रिएक्टेंट साइड देखना और प्रोडक्ट साइड देखना, कहीं पे वाटर रिलीज हो रहा है क्या, या सब फेज सॉलिड फेज है, या फिर सॉलिड सॉल्यूशन फेज है, ठीक है, ये मार्क करना। देन ओनली you see the option, then option के हिसाब से eliminate करके finally you are getting the answer, ठीक है। clear? हम करेंगे, don't worry, like I will solve the last assistant geologist question, because last assistant geologist question is a slightly tricky one. I like the question personally, but that is tricky one. They say univariant tie line, it is very confusing. Most of the student like go with the univariant. Okay,
Clear? Any doubt? So this is exactly, right? Exactly that I have seen. Fluoritoid, right? This is the fluoritoid. That is the one also tricky question. That can be the answer like two way. Fluoritoid like give rise to another garnet plus quartz is there. That is called the continuous reaction. But thing is, the all the phases are in the solid solution. Okay? Then you will go for the non-terminal reaction. That is also a trick one. See, UPSC is asking a tricky type question. Also, देखो कभी कभी one liner question you will get, कभी कभी tricky question get, कभी कभी numerical get. So the broad aspect of UPSC is like huge. ठीक है, मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि ब्रॉड वे पे पढ़ के जाओ ताकि you can get the easy one also. ठीक है. So anorthite gives rise to grossular plus kyanite and quartz. Always remember, this is the really important point. Net transfer reaction may be terminal reaction or tie line flip reaction. I always mention कि tie line flip reaction जरूरत नहीं है, क्योंकि tie line flip reaction अगर आप समझोगे, so you have to like understand properly the projection pattern, how the metamorphic mineral are projected. Then you will understand the tie line flip reaction. जैसे tie line join करके कैसे reaction हमको पता चलता है. Don't go through it. This is slightly advanced topic for the GATE examination, not for the this reaction. Just memorize at least, or this is the fact based मान के पढ़ लो. Net transfer reaction may be terminal reaction or tie line flip reaction. ठीक है? Suppose ये reaction दे दिया होगा. Suppose question पे anorthite gives rise to glossular plus kyanite plus quartz. ठीक है? Gr glossular. Suppose आंसर पे पूछेगा ये टर्मिनल रिएक्शन है, सेकेंड वन कंटिन्यूअस रिएक्शन है, ठीक है, लेकिन नेट ट्रांसफर रिएक्शन नहीं दिया होगा. एटलीस्ट यू शुड मेमोराइज. सो नेट ट्रांसफर रिएक्शन मे बी टर्मिनल रिएक्शन और टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसे घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है. ठीक है. सो ऑलवेज रिमेंबर वेदर द डिहाइड्रेशन रिएक्शन इज द कंटिन्यूअस और नॉन कंटिन्यूअस, whether the dehydration reaction is the terminal reaction or non-terminal reaction. ठीक है. सो ये आपको याद करके पॉइंट पूछ जाना चाहिए फॉर द एग्जामिनेशन. क्लियर? सो नेट ट्रांसफर रिएक्शन में बी द टर्मिनल रिएक्शन और टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन. ठीक है. जैसे मान लो अनॉर्थाइट दे रहा है ग्रोसुलर, काइनेट और क्वार्ट्ज. ठीक है. मैं प्रोजेक्शन नहीं जा रहा हूं बिकॉज दैट इज स्लाइटली एडवांस टॉपिक, सो दैट द सिलेबस विल नॉट कंप्लीट प्रॉपर्ली. ये बाद में देखेंगे, कोर्स जब पढ़ेंगे डिटेल मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी, देन बाद में देखेंगे लाइक दिस टाइप. बिकॉज दिस इज द एनोथाइट. इफ यू प्रोजेक्ट हियर सम लाइन एंड जॉइनिंग बिटवीन टू मिनरल फेजेस, ठीक है, एंड यू विल कैलकुलेट द रिएक्शन पैटर्न. So this is the tie line flip reaction. And what about the terminal reaction? We will see in a while. Now tell me the exchange reaction part. Clear? कैसे पढ़ना है एग्जाम के लिए? कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. नेट ट्रांसफर रिएक्शन क्या है, सिंपल सा चीज आपको पता होना चाहिए दिमाग में. सेकंड चीज, यू शुड मेमोराइज द एटलीस्ट, मतलब ये जो रिएक्शन का एग्जांपल है, सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द नेट ट्रांसफर रिएक्शन. यू शुड मेमोराइज. एंड अलोंग विद दैट, इज देयर एनी अलोंग विद फैक्ट बेस्ड लाइक पॉइंट इज देयर और नॉट? जैसे मान लो नेट ट्रांसफर रिएक्शन मे बी द टर्मिनल और टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन. ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए. डोंट गो थ्रू दिस टाई लाइन फ्लिप रिएक्शन फॉर द यूपीएससी असिस्टेंट जियोलॉजिस्ट. दैट इज स्लाइटली एडवांस टॉपिक. दिस इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द असिस्टेंट और यूपीएससी. ठीक है. क्लियर? अभी एक्सचेंज रिएक्शन बताओ. एक्सचेंज रिएक्शन क्या है बताओ. एग्जैक्टली राइट. ये जस्ट एक्सचेंज हो रहा है, सिंपल. Fe इन द कार्न. हाँ बताओ. हाँ यू कैन. हाँ एग्जैक्टली. दिस इज यूर सेइंग मेटासोमेट्रिक रिएक्शन. बताओ, यू टेल मी.
आई एम नॉट टेलिंग, बताओ कौन बताया? सरोज कुमारी, सुब्रत, कौन बताया ये मेटासोमेटिक रिएक्शन? मेटासोमेटिक रिएक्शन क्या है बताओ? रिएक्शन तो बताओ। रिएक्शन बताओ। Metasomatic reaction will not the exchange reaction. There will be some diffusion in the metasomatism process. Through the metasomatic process, different ion diffuse, right? So that is the other part. But I am asking ki what is the exchange reaction? हाँ, definitely will be there. मैं वही बोल रहा हूँ ना, there will be the some of the alkali diffusion will be there, not alkali diffusion will be happening. Different type of chemical species diffuse along that boundary, but that is not the exchanging about the chemical component. But is the exchange reaction is some like there will be the sum of the chemical component in the reactant side, ठीक है? But there will be the no new phase is coming. जैसे मान लो net transfer reaction पे क्या होता था, new phase completely is coming out, right? जैसे मान लो A plus B gives rise to C plus D, right? So C and D is different from the A plus B and B, right? But thing is A का chemical composition and B का chemical composition जो था C and D पे, और all those like chemical composition नहीं भी बोल सकते हो, chemical species बोल सकते हो, ठीक है? All those like chemical species is present along the A plus B, preserve होगा C plus D पे. But exchange reaction पे that is not the case. Phase change नहीं होगा, ठीक है? No new phase produced. Exactly, only chemical component will be only exchange, ठीक है? जैसे A मान लो यहाँ पे exchange हो जाएगा completely replace, that means you can say replacement type. Exactly. So exchange reaction involve chemical component being exchanged between phase. So composition change, definitely composition will change, but modes remain same. That means no phases disappear or no new phase are produced. See, in the garnet, if you see the garnet and biotite, यहाँ पे भी garnet biotite होगा, but seeing is there will be the sum of the replacement or sum of the exchanging between Fe and Mg. आज Fe and Fg क्या होता है बताओ? Why it is exchanging? Why बताओ क्यों Fe? Exactly, right? Same ionic size. That's why it is exchanging between the biotite and garnet. ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए. Fe in the garnet, Mg in the biotite will get replaced or get exchanged. So Mg and Fe. Clear? Here no new phase will be produced, but net transfer पे क्या होता था? New phase are produced. So this is the basic difference between the net transfer and exchange reaction. Clear? Okay. ये हम डिस्कस किए हैं. So ये डिस्कस किए हैं. So this is ना ये बताया था ना. So this is the line joining between the two phase that is equilibrium with each other, and B suppose, and C and D are the two phases, and B react with. So this is the reactant, and this is the product, give rise to C plus D. जहाँ पे समझ नहीं आएगा please ask me, because this is a really important topic for the GATE examination as well, for the understanding of the ACF, AKF, AFM projection, ठीक है? And जैसे मान लीजिए GSI मेंस पे आपके मेटामॉर्फिज्म ऑफ पेलिटिक रॉक सिलेबस पे है ना, मेटामॉर्फिज्म ऑफ बेसिक रॉक, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. मेटामॉर्फिक रिएक्शन इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दोस थिंग्स, ठीक है? सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइम. दिस इज फ्लिपिंग बिटवीन द टू लाइक A and B प्रोड्यूस टू C and D, ठीक है? ये पॉइंट ये देखो, व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम हियर? This point, this is the invariant point, right? There will be all the phases stable here. See, at this particular point, A will be present, B will be present, C will be present, and D will be present. Am I right or wrong?
सो जीरो होगा ना, राइट? सी कैसे होगा, कैसे होगा बताओ मुझे, कैसे होगा? जो बोला डिग्री, प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट कैसे है? यहाँ पे तो प्रेशर टेम्परेचर आपको दिया हुआ है क्या? प्रेशर इज नॉट गिवन यू, टेम्परेचर भी गिवन नहीं है आपको, कैसे पता चलेगा? टाइलाइन की वजह से आपको इनवेरिएंट पॉइंट मिल रहा है क्या? यू हैव टू नो दैट हाउ द डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी जीरो. सिंपल, डिग्री ऑफ फ्रीडम विल p plus f विल बी c+2. सो c+2 माइनस p. कितना कंपोनेंट है बताओ, कितना कंपोनेंट है? 4 कंपोनेंट. फेज कितना है? फेज कितना है? कंपोनेंट कैसे? ओके ओके, p plus s will be c+2. Am I right or wrong? Yes or no? So degree of freedom will be component plus 2 minus phase. फेज कितना है, कंपोनेंट कितना है, ये बताओ मुझे. यहाँ पे along the tie line फेज कितना है, कंपोनेंट कितना है, बताओ. ओके, कंपोनेंट 2 है. फेज कितना है, कंपोनेंट क्या क्या है बताओ, वो भी तो बताओ, कंपोनेंट क्या क्या है. ए और बी का कंपोनेंट सेम है, सी एंड डी. Exactly, right? That means you understand the proper phase rule. The component will be 2 and phase is 4. I already mentioned, please go to my YouTube, the phase rule. I mentioned कि how to determine the component. And अभी बोला मैं A और B will always the same phase. अभी बताया ना, that connecting the same line, that is called the tie line. हाँ बताओ, any doubt? So A and B and C and D are the different phases. So A, B, C, D are the 4 phase. But thing is A and B का component chemical species, देखो ये slightly tricky हो सकता है because like A and B you know don't know about the chemical species. Suppose A बोल दूंगा मैं andalusite sillimanite suppose है, B है suppose एक orthoclase है, then that should be slightly tricky one. But we assume normally A and B are get equilibrium with each other. जैसे मान लो Al2SiO5, ये तो कंपोनेंट 1 assume करते हैं ना, yes or no? So see, along that line component will be 1, but along that line 2 phases is stable, kinetic and sillimanite. Same as along that line the component will be 1 and the phase will be 2. Clear? So same C and D are the different component, the phase will be 4. Sorry, यहाँ पे phase 2 होगा, यहाँ पे phase 2 होगा. That means phase will be 4, component will be, यहाँ पे component 1 है for this and for this chemical component will be 1. So 1 plus 1 2. Clear? Degree of freedom will be 0. Clear है या नहीं बताओ? So see, so this is for the igneous system, this is for the metamorphic system. So this line is flipping between A, B and C, D. That's why we are saying the tie line flip reaction. So this is the tie line, one tie line, and this is the one time tie line that is flipping between the 4 phases. That's why we are normally calling the tie line flip reaction. ठीक है, ये एप्लीकेशन है प्रोजेक्शन डायग्राम पे, SCF, AKF, AFM. क्लियर?
Yeah, any doubt? So this type, when you project in the AFM projection, you will see. Okay, so this is called the tie line flip reaction between the kyanite, garnet and OPX is there. So we'll normally see. ये प्लस क्यू लिखा हुआ है. What is the meaning of that? Can you see? क्यू लिखा हुआ है. बताओ. Exactly. A system पे quartz is there. Okay. Okay. Now comes to the based on phases involved. Polymorphic reaction में बता चुका हूँ already. All the reaction is taking place in the Andalusite system, silimanite system, or calcite aragonite. See, the aragonite will stable at high pressure condition, right? Calcite is stable at low pressure condition, low temperature condition. Yes or no? So all those like polymorph of CaCO3, and the reaction between them is called the polymorphic reaction. And all those are the polymorphic reaction. See, this is the important point. A special type of solid-solid reaction. ठीक है? Clear? अगर क्वेश्चन दे दिया कैल्साइट aragonite, बट ऑप्शन पे आपको पॉलीमॉरिक रिएक्शन की वजह से solid-solid reaction दिया होगा. Then you will see. You should memorize like important fact. जैसे मान लो polymorphic reaction are the special type of solid-solid reaction. Simple says. And involve the phases of identical composition. What do you mean by polymorph? Polymorph, same composition but different structure, right? Structure. So it involves the phases of the identical composition. That are the example the reaction along the aluminum silicate जो दिखे थे Al2SiO5 system. ठीक है, कैल्साइट aragonite. अभी बताओ यहाँ पे कैल्साइट aragonite फील्ड पे along that line what is the degree of freedom? 1. कितना कंपोनेंट है? 1. क्या कंपोनेंट का नेम बताओ? कंपोनेंट इज 1. क्या है कंपोनेंट है? CaCO3, right? So component will be 1 plus 2. Phase कितना है? 2. So 3 minus 2 will be 1. So degree of freedom will be 1. ठीक है? जैसे मैं एग्जाम पे भी ना आपको क्वेश्चन दिया था फेज रूल. फेज रूल पे वही बोल रहा हूँ, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर दे. सच बता रहे हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट गलत कर दे. आई विल फ्रेम लाइक ए डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द. जैसे मान लो मैं पूछूंगा व्हाट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ फेज. ऐसे क्वेश्चन आ रहे हो सकता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फेज. ठीक है, इन अ डिफरेंट वे यू कैन पुट द क्वेश्चन. मेनी स्टूडेंट सच बता रहा हूँ, द फेज रूल किसको समझ में नहीं आता है. सिंपल यही रट के जाते हैं P plus F will be C plus 2. ठीक है, सिंपल. जैसे ना वही बोल रहा हूँ, मेनी स्टूडेंट रट्टा मारते हैं गिव्स फेज रूल दिस. फेज इतना हुआ, कंपोनेंट जो भी न्यूमेरिकल कुछ 2-3 प्रैक्टिस किए होते उसी को रेट किया जाता है. इवन इफ डोंट अंडरस्टैंड अबाउट द व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ द फेजेस, कैसे डिराइव होता है फेजेस, कैसे कैलकुलेट करते हैं, whether it is a calculate from the chemical species or ion. सपोज कहीं पे आयन दिया होगा, सपोज मान लो K plus Na plus ऐसे आयन दिया होगा Ca2 plus. How do you determine the phases and component? ठीक है, so that is bit tricky one. Phase rule is slightly tricky one. Okay, any doubt here regarding the polymorphic reaction? ठीक है, polymorphic reaction is not like important for the examination. ये क्या दिया होगा? Kyanite to silimanite, Andalusite to silimanite. This type of reaction is the polymorphic reaction. Calcite to aragonite. Okay, aragonite is not stable at the surfacial condition, right? Am I right or wrong? It is not stable because it is found in the high pressure condition. ठीक है, अभी आओ solid net transfer reaction. solid net transfer reaction क्या हुआ बताओ, क्या मीनिंग है इसका?
Exactly same. Exactly that is also solid solid net transfer है ना, because solid is transferring, there is no involvement of the, क्यों दिया हुआ है solid solid, that means in the reaction side solid is present, there is no liquid present. In the product side there is also solid present, there is no liquid present. See, a plus b equal to c plus d, there will be the no liquid present. But see, but thing is solid solid net transfer reaction पे, ठीक है, volatile present नहीं होगा. If the volatile will be present, then that volatile should be conserved. Clear or no? But एक केस पे हो सकता है that the volatile found in the atomic structure, not it will give rise to the volatile as a product, or like no उसको क्या बोलते हैं, no evolved volatile or no evolved fluid phase will come in. जैसे मान लो a plus b will give rise to c plus d plus h2o. It is not the solid solid, हाँ plus h2o बोला ना, है ना, right? आई एम नॉट टॉकिंग, सुनो पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, c plus d give rise to plus h2. ये जो h2o प्रेजेंट है all are solid, yes or no? But this is the volatile present here. This should not be the solid solid net transfer reaction. But if I will say a OH plus b will give rise to c plus d, whether it is a solid solid net transfer reaction or not? Yes, it is solid solid net transfer. वही बोला, the volatile will be in the atomic structure of the mineral, not as a giving rise to the product, or not in the evolved volatile. See, this is the volatile, right? But this OH is present in the atomic structure. Clear? Okay, that's great. Exactly एटम के अंदर, नॉट लाइक सेपरेट वोलेटाइल fluid phase is present, that is the structure of the atom or structure of mineral, right? So are often just called the solid solid reaction भी बोलते हैं, occur along the solid phases of different composition. These phases may include the element found in the fluid, that is H, carbon, but those elements are conserved in the solid phases. अभी बताया ना, so OH should be conserved in the solid phases so that the no fluid phase are evolved as reactant or product. इसको बोलते हैं evolved fluid phase, जो H2O and CO2 देता है either in the reactant side or in the product side, इसको बोलते हैं evolved fluid phase is giving. So that should not be present. H2O and CO2 should not be present as the reactant or product. It is called the solid solid net transfer reaction. Okay, and always remember this point, solid solid net transfer reaction can be continuous, ठीक है, and can be discontinuous, but they may be terminal or Tyler flip reaction. Okay, clear? Okay, continuous discontinuous क्या है बताओ? I will also discuss in a while. Continuous or discontinuous reaction क्या है? All those reaction can be continuous, all those reaction can be continuous depending upon whether the बताओ exactly whether the particular reaction is taking place, ठीक है, at a particular pressure temperature condition, or the new mineral will come, the new mineral phase will become along that particular discontinuous reaction. मतलब क्या है, along that particular discontinuous, I am not talking about continuous. Discontinuous मतलब particular point पे there will be the additional phase will come, right? Like at eutectic point, the new mineral phase will come,
that is called the discontinuous reaction. All those reactions can be discontinuous, continuous, depending upon the pressure temperature range. Okay, whether the complete reaction is completely like reacting with each other and giving rise to another product or not, or whether the particular at a particular point the new mineral phase will come, that is called the discontinuous. Clear? So ये फैक्ट हमेशा याद रखना, सॉलिड सॉलिड नेट ट्रांसफर रिएक्शन कैन बी कंटिन्यूअस or can be discontinuous. They may be terminal reaction also and tie line flick reaction also. ठीक है? And जब भी when I am like giving the lecture, ठीक है? Please make notes. जब क्लास कर रहे हो ना, the involvement of the your side is much required rather than the teacher. ठीक है? स्टूडेंट का मेहनत जरूरी है instead of the teacher. Teacher is doing their work. Right? I am giving you the lecture as per of my knowledge. I am not giving the examination. Simple. आपको examination देना है तो आप कैसे involve होके पढ़ाई करते हो? How do you revise well when you go back to home? That is more important part. Rather than just class करके there will be no point of view. Class में सब चीज याद होता है, but after you go home there will be like blank. ठीक है? So in a certain type of interval you should memorize things, ठीक है, and you should revise those things. अभी आप क्लास के बाद अगर आप देखोगे ना, हाँ polymorphic reaction subconsciously you visualize those things after the class, but after 1 day, after 2 days, after 1 week it will be completely blank. So always have the paper and pen, make notes out of it, right? Make diagrams. जैसे मान लो मैं डायग्राम कर रहा हूँ, proper involvement जरूरी है क्लास में, right? That is most required. Okay, clear? So most of the solid-solid reaction plot on the PT diagram are essentially straight line. Why it is straight line along the solid-solid net transfer? बताओ. Because there is no completely involvement of the fluid. Simple such is. Am I right or wrong? So if you plot in the PT diagram, solid if you plot in the PT diagram, the line should the PT or slope is straight, right? Because there will be like A plus B give rise to C plus D phase, where A and B and C and D all the light solid chemical spaces. जैसे मान लो GSI मेंस पे भी ना इतना भी अगर लिख दोगे ना विदाउट नॉलेज ऑफ द व्हाट इज द A and B and C and D, you should get mark. Trust me. अगर इतना भी लिख दोगे A plus B give rise to C plus D, where A, B all the solid chemical species. This is the like example of the solid-solid net transfer reaction. ये diagram draw कर दो. Simple सा चीज. This is the PT diagram. Temperature in degree centigrade, pressure in kilobar. ठीक है? So this is the producing the like you will give rise to slope. This is the slope is straight line. Slope can be calculated by लिख दो ना dp by dt equal to del s by del v. हो गया 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया आपका solid solid net transfer. Clear? इतना भी अगर लिख दोगे you will get mark without like example, proper example. ठीक है? अगर याद नहीं है तो भी जैसे मान लो मैं अगर बोलूंगा A plus B give rise to C plus D plus H2O, it will release the H2O as the fluid. So this is the dehydration reaction. इतना भी GSI मेंस पे लिख के आ जाओ, we will get mark without knowing it. Suppose मैं लिखूंगा moscovite plus quad give rise to kyanite plus H2O. Suppose याद नहीं है, reaction याद नहीं है, ये लिख के आ जाओ, you will get marks. This is the reactant side, this is the product side. Simple सा चीज. आपको मेंशन करना होगा A, B, C, D are the chemical species. Simple सा space. And it will give rise to the H2O. Right? So most solid-solid reaction plot on the PT diagram as essentially straight line. Why it is straight line? Because there is no involvement of the fluid. अगर fluid होगा तो pressure and temperature के हिसाब से वो change होगा, right? कल बताया था ना, अगर fluid present होगा
If the pressure is high in a fluid, suppose fluid present होगा, then volume will be reduced. Am I right or wrong? अगर volume reduced होगा, then the slope will be higher side. If the pressure is low, then volume will be higher. If the volume will be higher, then the slope will be gradually decreases. So there will be the involvement of the concave slope and steep slope. ये कौन सा केस है? If the fluid is present. Clear? अगर fluid present नहीं होगा, then it is completely straight. Clear इतना? ये देखो सेम चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, del S and del V of reaction do not change much bearing pressure and temperature, जो अभी बताया था. अगर fluid present नहीं है तो del S del V change नहीं होगा, pressure change नहीं होगा, then you will get only the solid line. अगर fluid present है, so accordingly at lower pressure volume will be higher, at higher pressure the volume will be reduced, that wise the accordingly slope will vary. Clear? ये याद रखना, मैंने solid reaction are the continuous अभी बताया था. These point are important. ठीक है, this point is important. Many solid reaction are the continuous because they will involve the phases whose composition is continuously changing over a wide range of PT condition. Over a wide range of PT condition. That is called continuous reaction. ठीक है? या any doubt? क्या? Continuous or discontinuous? Solid or can be. मैं वही बोला ना, can be continuous or discontinuous. मैं वही बोला ना, the continuous and discontinuous reaction is only depend upon whether the reaction is happening over a wide range of pressure and temperature condition or a fixed temperature and condition. Continuous, discontinuous, like other things. A particular reaction is like can be continuous, can be discontinuous, depending whether the reaction is fixed at a particular pressure temperature condition or it is given rise to like completely wide range pressure and temperature. ठीक है? But most of the solid reaction मैं वही बोला, most of the it can be continuous or see language देखो. जब एक चीज पढ़ रहे हो, you should watch the language. Solid net transfer reaction can be continuous or discontinuous. See, here it is written, but here it is written reaction are continuous. That means what is the basic difference between these terminology or these literature? That means you should understand that most of the solid reaction are continuous, but thing is it can be possible that solid reaction are maybe discontinuous reaction sometimes. Clear or doubt? ठीक है? Why this is continuous? Because it is continuously reacting with each other and giving rise to phases that is completely of different composition over a wide range of pressure and temperature condition. Clear? Like this. This is the example. You should remember. So kyanite plus OPX. So this is kyanite plus OPX give rise to OPX2 and garnet. So this is the continuous reaction. ठीक है? क्यों continuous reaction? देखो orthopyroxene one give rise to another orthopyroxene of different composition. जैसे मान लो igneous example दे रहा हूं simple. ये जो melt है इसका जो composition है when you cool back, when you cool down, suppose when it reaches the X point, it will give rise to liquid of different composition. Am I right or wrong? Yes or no? बताओ. Am I with you or clear? So relate करना. So जो भी reaction जैसे मान लो ये eutectic point है, ये melt है. जब ये point पे आके cool होगा, when it reaches the liquidus, the crystal will start, right? So suppose X point पे जो भी liquid composition है, again it cool down Y point पे वही liquid मिलेगा लेकिन of different composition, right? So X will be suppose liquid 1 give rise to liquid 2. Am I right or wrong? So along that line the continuously reaction is happening and it is continuously producing
the different phase of different composition. Clear? So that is called continuous reaction. So along that line of the eutectic, along that line, what is happening is called continuous. But at this eutectic, what is happening at it is continuous. Because when it reaches the eutectic point, the suppose A composition is fixed and A will appear no at this particular point. So at this particular temperature, जैसे मान लो ये composition है, ये temperature है, ठीक है, TX diagram. So temperature यहाँ पे fix है ना, yes or no, at this particular point. So ये particular point पे एक new phase आएगा, yes or no. That is I am saying कि at a particular temperature the reaction is happening, that is called the discontinuous phase. Clear? फेज ट्रांसफर बता दिया, सेम इट इज कॉल्ड द पॉलीमॉर्फिक रिएक्शन, है ना, जो फेज ट्रांसफर रिएक्शन पॉलीमॉर्फिक रिएक्शन, और इसको बोलते हैं फेज रिएक्शन, फेज ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन. ओके, सो दीज आर द पॉलीमॉर्फ ऑफ द CaCO3. I already have discussed this. ये जरूरी नहीं है ये, एंड याद रखना ये चीज, ये छोटा बहुत fact है. So this is the invariant point, this is fixed, right? The temperature and pressure is fixed, right? ये याद करना है आपको, ठीक है. The temperature is 560 degree centigrade and pressure is 0.5 gigapascal. Clear? 1 बार कितना पास्कल है बताओ? बताओ, anyone? क्वेश्चन दिया आपको, बताओ. वन बार इक्वल टू 1 पास्कल. क्या बात कर रहे हो भाई? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एटमोस्फेयर, आई एम टॉकिंग अबाउट पास्कल. क्या होगा? विदुषी बताओ, रूबी, सरोज, सुब्रत, बताओ कोई भी. वन, सो दिस इज वेरी बेसिक, राइट? 1 बार इक्वल टू कितना पास्कल होगा? एग्जैक्टली, राइट. 1 बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल. 1 किलो बार इक्वल टू कितना पास्कल होगा? 10⁸ पास्कल. am I right or wrong? yes or no बताओ. 1 मैं बोलूंगा 1 किलो बार डैश जीगा पास्कल कितना होगा बताओ. हाँ, क्या बात कर रहा हूं? 1 किलो बार इक्वल टू 100 जीगा पास्कल. कैसे? गीगा 10⁶ है. 1 gigapascal equal to 10⁹ पास्कल, राइट? अभी बताया हूं. दिस इज वेरी बेसिक, यू शुड रिमेंबर सो दैट यू कैन अप्लाई इन द न्यूमेरिकल ऑल्सो, राइट? सपोज न्यूमेरिकल कोई दे दिया होगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन दिया होगा पास्कल पे, बट आंसर पूछा होगा जीगा किलो बार पे, कैसे तुम कन्वर्शन करोगे? वन बार इक्वल टू 10⁵ पास्कल. am I right or wrong? 1 किलो बार इक्वल टू, किलो मीन्स क्या है? 10⁵, 10⁵ पास्कल. so 1 किलो बार इक्वल टू 10⁸ 8 पास्कल. yes or no? अगर इसको 10 ऐड करूंगा तो 10 डिवाइड करूंगा, 10⁹ मतलब क्या है? जीगा पास्कल. डिवाइडेड बाय 0.1, सॉरी, डिवाइडेड बाय 10 मतलब 0.1 जीगा पास्कल. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो 1 किलो बार इक्वल टू 0.1 जीगा पास्कल. इंपोर्टेंट फॉर द न्यूमेरिकल अप्रोच ऑल्सो, ठीक है. एक सॉल्यूशन बताओ, ये तो सारे कुछ पढ़ चुके हो. एक सॉल्यूशन रिएक्शन मतलब इट इज शोइंग बाय फेल्डस्पर ओनली.
बताया था. That means one phase is exalt. हाँ बताओ, any doubt? Unmixing of two phases. Due to unmixing, what happens is one phase is exalt in and another phase. ठीक है, right? Suppose there will be the two phase A and B. सब मैं A B पे दिखा रहा हूँ, ठीक है. Suppose there will be the some type of mineral A, ठीक है, and completely. So this is the one complete mineral. Suppose B is another, right? That means one phase is exalt other, ठीक है कि नहीं? एक phase other पे exalt किया है, right? So that is called the exsolution texture. It is formed due to the unmixing. See, here mixing is happening along this field. Am I right? Along this field, completely orthoclase is mixing. Yes or no? So along this field, orthoclase plus albite will be mixing to form the single feldspar. But when it reaches or when cooled down, it will form two separate feldspar. Here the unmixing is happening, right? So this is called the exsolution texture. मैं igneous पे पढ़ाया चुका हूँ already, right? हाँ, there are two type of exsolution is important है. Exactly, right? Due to exsolution, portrait texture is forming, anti-portrait texture is forming. See, portrait texture क्या है बताओ? K feldspar will be the measure. Am I right or wrong? So, not plagioclase, albite आएगा. देखो plagioclase जब form plagioclase जब बोल रहे हो ना, plagioclase is a group of mineral. It varies from the anorthite, be it biotinite, be it labradorite, right? So plagioclase is a series of mineral, not a single mineral, right? So K feldspar measure होगा, जो host and इसके exalt करेगा क्या? Albite. ये होता है portrait texture. इसका opposite है anti-portrait texture. Clear? Solid-solid net transfer reaction अभी बताया था, that involves solid only, differ from the polymorphic transformation reaction, involves solid of differing composition. जब differing composition होगा तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं continuous reaction. ठीक है? Continuous reaction is happening over a wide range of purity condition. ठीक है? So this is the example. ये याद रखना. So jadeite quartz gives rise to albite, or anstatite, anorthite give rise to diopside and andalusite. ठीक है? So these are the some of the example of the solid-solid net transfer reaction. Okay? Or garnet plus CPX give rise to quartz. Sorry, OPX plus plagioclase give rise to garnet plus CPX plus quartz. See, jadeite plus quartz give rise to albite. Albite also in solid phase, jadeite and quartz also solid phase. That's why it's coming to slope is straight line. Clear? This type of. GSI मेंस पे कुछ नहीं लिखना है. अगर क्वेश्चन आ गया तो ये डायग्राम ड्रॉ कर दो, सिंपल. अगर इसके की वजह से सपोज एग्जांपल याद नहीं है, सिंपल ए बी लिख दो ना. सी कोई नहीं है. अगर बता दोगे ए बी सी आर तो सॉलिड केमिकल स्पेसिस, देन द एग्जामिनर विल गिव मार्क. सिंपल सच इज. तो दिस यू शुड मेमोराइज. जाडेट क्वार्ट्ज हो के अल्बाइट. देखो यहाँ पे कोई भी H2O फेज नहीं है. सिंपल, ऑल आर द सॉलिड केमिकल स्पेसिस. तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपको एग्जाम पे, पहले रिएक्शन देखना अच्छे से. ठीक है? रिएक्शन अच्छे से देखना, फिर ऑप्शन देखना. पहले तो रिएक्शन देखना, फिर ऑप्शन देखना, फिर एलिमिनेट करके आंसर फाइनली you will reach that answer. Okay? Okay, solid reaction also talc and statite, anthocalite. ATH मतलब anthocalite. देखो, if mineral content volatile,
अगर सॉलिड मिनरल पे वोलेटाइल है then the volatile must be conserved in the reaction so that no fluid phase is generated or consumed. Okay, so volatile should be conserved. जैसे मान लो यहाँ पे टाल्क पे OH, OH is the atomic structure, OH in the atomic structure mineral पे, not like separate fluid phase. ठीक है, and all the like that OH is present in the atomic structure that should be conserved. ठीक है, so that the no fluid phase is generated or consumed. So that is the most important part of the solid-solid reaction, right? It involves the hydrous phase. ये जो OH present है ना, इसको बोलते हैं hydrous phase, hydrous phase. But H2O अगर present होगा उसको बोलेंगे volatile. Clear? So this is the basic difference. OH is present at the atomic structure of mineral, that is called hydrous phase. इसीलिए हम बोलते हैं हाइड्रोस मिनरल. मॉस्कोवाइट और माइका इज द हाइड्रोस मिनरल, इसीलिए बोलते हैं बिकॉज दैट OH इज प्रेजेंट एट द माइका एटॉमिक स्ट्रक्चर. क्लियर? सी along that particular line what is the reaction is happening is called continuous reaction, but at the eutectic point at a particular temperature, that means 1274, what is the reaction is happening, it is called the discontinuous reaction. So this point is the discontinuous reaction, you know, but along that line the reaction is completely happening over a, see, from this point to at 1274. So over a wide range of the temperature and pressure condition. ठीक है, pressure तो यहाँ पे नहीं है because pressure is fixed, that's why we called it temperature versus composition diagram. Okay, pressure is fixed, that's why we normally at this condition we normally taking the reduced phase rule. P plus F will be C plus 1. Clear? Yes or no? बताओ. X फिक्स होता. हाँ, अगर X फिक्स हो, मैं अगर क्वेश्चन पे दे दिया होगा सपोज इन ए पर्टिकुलर सिस्टम इफ द प्रेशर इज फिक्स्ड, और सपोज ऐसे फ्रेम करूंगा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट ए टेम्परेचर ऑफ 560 डिग्री. ठीक है जी, A plus B equal to C plus D. ठीक है, ठीक है ना. सो व्हाट इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, यू कैन ऑल्सो अरेंज दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. Either one particular intensive parameter is fixed, then you will take the P plus F will be C plus 1. Are you getting my point or no? So यहाँ पे P plus F will be C plus 1 होगा. मैं वही बता रहा हूँ ना, all the phase diagram are why it is T versus X, because at this particular diagram pressure is fixed. Simple सा चीज है. तो अगर pressure fixed है, that means there will be not two intensive parameter. ये जो दो है, दो इंटेंसिव पैरामीटर प्रेशर एंड टेम्परेचर है, वन इज फिक्स्ड, दैट मींस प्रेशर इज फिक्स्ड, रिमेनिंग क्या है, टेम्परेचर है. यस और नो? दैट्स व्हाई all the reaction is happening along a wide range of temperature, that is called continuous reaction. All that is happening along a particular pressure temperature condition, that is called discontinuous reaction. ये याद रखना है. ठीक है. When solid solution is limited, solid solid transfer reaction are a discontinuous reaction. ठीक है. So this is the exception or rare case. ठीक है. Clear? Already it is 1 घंटा हो गया already, 1:10. It is already 9:45. Exactly. There are a lot of concept. Geothermometry equation पे use होता है, construction of the geothermometry. That's why we are normally saying this. That is not required. Actually, that is like a more advanced topic. How do we construct the geothermometry from the temperature and pressure condition? That is another topic. Don't go through this. Like particular examination like UPSC or like CSI bit it. ठीक है. There much depth will not be asked. Simple सा चीज reaction और कुछ छोटा मोटा concept. बस इतना. Geo. Exactly. Write down. Write down about the geothermometric reaction, right? Write down about geobarometric reaction or geobarometric.
you can get in the short note or the like completely subjective question. मैं वही बोला, that is in the GSI mains, but that is not in the GSI prelims, right? So this is slightly advanced topic. आप GSI मेंस में ना आपको लिखना है, तो वहां पे आप रेटा मार के भी चले जाओ, यू कैन राइट yes or no, but for the objective, see the main objective for the objective examination, the objective question test your knowledge, subjective examination is test your skill, and interviews is all about the test your personality, how you will speak. ठीक है, जैसे मान लो, रिपीट अगेन, क्या बोल दिया, all the objective examination, the motive of objective question is just test your knowledge. Actually objective question test करता है आपके knowledge, not the subjective. Subjective is completely the how you write, how you present, that is most important. It is a skill, वो gradually develop होता है skill. ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब जो एग्जाम है वो देने जाओगे, सो इट कंप्लीटली टेस्ट योर नॉलेज, हाउ मच यू नो अबाउट द सॉलिड सॉल्यूट नेट ट्रांसफर रिएक्शन, हाउ मच यू अप्लाई इन द पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, हाउ मच यू अप्लाई इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन, whether it is a completely solid solute or oxidation reduction reaction. So that is completely test your knowledge. But subjective examination is completely way of writing, skill, it is a skill, right? अगर जियोथर्मोमेट्री बैरोमेट्री अगर पेज खोल दोगे, पढ़ के भी जाओगे, तुम तो कुछ के लिख के आ जाओगे विदाउट नोइंग एनीथिंग, सिंपल सा चीज. तुम रट्टा मार के भी चले जाओ, यू कैन राइट समथिंग, राइट? बट इफ यू लाइक अराइज सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एटलीस्ट यू शुड रिमेंबर द कॉन्सेप्ट. क्लियर? ऑलरेडी इट इज टू लेट, हो गया है, देन वी शुड स्टॉप. See, in 2 days, in 2 lecture, also metamorphic reaction is not completed, right? So it takes time. There are a lot of slides there, right? 20-30 slides. चलो devolatilization reaction एटलीस्ट कंप्लीट कर देते हैं इसको. हाँ, devolatilization reaction का मतलब क्या है? The volatile is simply released. Okay, ठीक है. Suppose that means A plus B give rise to C plus H2O. H2O is released. ठीक है? So that is called the devolatile reaction. The volatile will be released. Okay? So ये याद करना है. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ ना, devolatile मतलब volatile release होगा in terms of H2O मान लो और CO2 मान लो और both मान लो. ठीक है? अगर सिर्फ H2O present मतलब दे रहा है, if it give rise to only H2O, it is called the dehydration reaction. जैसा ये रिएक्शन है, moscovite plus squash, K-feldspar plus ilmenite plus H2O, right? It is called the dehydration reaction because H2O is present. ये देख के आपको पता चलेगा whether the H2O is released or CO2 is released. So it is called the dehydration reaction. ठीक है? Decarbonation reaction पे CO2 release करेगा. Clear? So example will be the metasomatism or metasomatic reaction. So calcite CaCO3 plus gives rise to, SiO2 give rise to wollastonite, CaSiO3 plus the Ca2 will be released. Clear? जब एग्जामिनेशन पे लिख रहे हो ना, ऐसे मार्क करना. So this arrow you should mark. That means the CO2 is released or CO2 is conserved. Clear? ये मार्क करना. So here the CO2 will release along with the wollastonite. And combined dehydration and decarbonation reaction, that means A plus B give rise to C plus H2O will be also there and CO2 will be also there. ठीक है? And prograde reaction that consume H2O, simple सा चीज, H2O consume होगा and liberates CO2. ये भी एक devolatilization reaction है. Opposite हुए, CO2 conserve हो जाएगा और H2O रिलीज होगा. ये भी एक devolatilization reaction है. Are you getting my point? All these type of reaction or all 5 reaction are called devolatilization reaction. Clear? Okay. So it's already late. We'll stop.
Okay. So tomorrow I'll solve the assistant geologist metamorphic part. Okay. Tomorrow or day after tomorrow. Okay. Or any doubt you can ask. Any doubt.